Okay, so yesterday we saw map and other stuffs. Map, sorted map, tree map, the whole implementation of map. And we also came across this concept, sorting. We also did sorting. So if we are just using array list with some wrapper types, classes which are already part of Java library, so it's really easy to sort them. Why? Because we read some concept yesterday. Let me show you. Um, let's see documentation of comparable Java. Okay, so this says this interface. Let's take its signature first. Public interface comparable. This interface imposes a total ordering on the object of each class that implements it. So that's fine. It's this ordering is referred to as a class by natural ordering. Everything is natural here. Okay, no artificial. Okay, so everything is natural. That means 1, 2, 3, 4, 5, something like that. And the class compared to method is referred to as its natural comparison method. So what it has actually. So if you scroll down, we just have one method, int compare to. Okay, since it's interface, it must have some method, and that method must be abstract method. That's what we have learned so far. That if you're dealing with any interface, method should not give any method definition. Declaration is enough. If you do this, that's fine. If you give the body, you will get a compiler error, because as per Java specification, you cannot give method body inside interface till Java 7. Okay, so what this compare to do? Compare to method do? It definitely compares the object. But what's the condition? So when I've asked you that where did you get that concept returning 0, 1 or negative? If you notice, the method returns integer value. Okay, and here is something. See, the official document clearly states that, but of course not in that much detail. It says it returns a negative integer 0. Negative integer, let me complete the sentence. Returns a negative integer, returns a 0, or returns a positive integer as this object is less than if this object is less than if this object is greater than, sorry, equal to, or greater than the specified object. So if you see from that statement, I have created three different statements. Then the specified object. Okay, now you can see we have three statements. This method returns a negative integer if this object is less than the specified object. Specified means this object. Obj. Here, let me put a note so you can easily understand this terminology. Specified object. Here, obj is the specified object. Okay. Returns a 0 if this object is equal to the specified object, and returns a positive integer if this object is greater than the specified object. Pipin, what do you say? It's clear from where that video came, or from where they took this concept, or you can say logic. Yes, It's this is actually clear. defined in the documentation. But if you see this line, most of the guys, I would say 90% guys won't understand this language first time. If they're reading this document first time, and if they read this, they might won't get it.
So from this one line, I have created three statements: returns negative integer, returns positive, or returns this as per the required. So specified object is this one. And if you have noticed your compared to method implementation, you must be using some this keyword, right? So this is that current class object, and the next one which is gets compared from the past view of object. So this one is here. Okay, so this was about comparable. So let's go back quickly. And yesterday we were facing some issues on this object, or not this one, sorting, I guess. Yeah, this one. So close others. So issue was if we try to pass users to sort this, what we were getting, the method sort in the type collection is not applicable for the arguments. So the very first condition is if you are creating your own object. Okay, here we're talking about some interesting fact about sorting when using, come on, custom object. Fine. So custom object or class is better. Custom class should implement comparable interface and not implement, or say give, should give the implementation of this method what we read last photo method by using below logic. Logic is this one. So whatever you did, Vipin, that's fine, and we are going to do the same here. So if you notice, our class user is not comparable. How does it knows that how to compare age or name? So it simply do what? It says implements comparable. Okay, and you have to tell the comparable that what type you are using or you going to use. So I'll say user. I know it's already there, but again let it know, because when we are going to use this thing, we have to tell this explicitly that what kind of object we are going to pass inside compared to object as an argument. This one, what you're going to pass inside it, the specified object I'm talking about. And let's override this method. There it is, compared to, and you can see since I have given user, now you will notice as I've given user, it knows we are going to pass user. In case if you haven't passed it or forgot or not maintaining it, first of all it will give you the error here that now it doesn't knows. And if you just override this method, see it will take by default object, and I think you missed that. Pipin, did you use your class or just left it empty? Somewhere I saw you missed that, either comparable or comparator, somewhere you missed that. So ideally you should pass the type. So when you give the type, कंपेरेबल में मैंने मिस किया था इसी में से तो मैं यहाँ पे मैंने वो राइट, प्रोवाइड नहीं किया इसके टाइम ठीक है, हाँ तो ये देना जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप मेथड को ओवरराइड करोगे तो ये इक्लिप्स या कोई भी एडिटर आपको बाय डिफॉल्ट यूजर का ऑब्जेक्ट देगा, तो कास्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, अगेन वी आर जस्ट सेविंग आवरसेल्फ फ्रॉम द कास्टिंग। सी, अदरवाइज वहाँ पे आपको पहले कास्ट करना पड़ेगा, तब उसका आप मेथड कॉल कर सकते हो, पर यहाँ पे केस नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी कंपाइलर को बता दिया कि कंपेरेबल अब यूजर क्लास के एलिमेंट को कंपेयर करने वाला है। तो इट विल गिव यू दिस, इट नोज कि कंपेयर टू मेथड जो है कंपेरेबल का, उसके अंदर यूजर टाइप के ही ऑब्जेक्ट जाएंगे, तो कास्टिंग आपकी सेव हो जाएगी। तो रन टाइम पे क्लास कास्ट का कभी एक्सेप्शन आएगा ही नहीं। और लॉजिक यहाँ पे लगा दो, सेम लॉजिक इफ, इसी को रीड करेंगे। सो रिटर्न्स नेगेटिव or positive, returns negative, this object, current object is less than the specified object. So current class is this. Let's say we are going to do on age. So this dot age less than user dot
get age. Okay, so if it is the case, so return -1 Yes. semicolon. If this dot age, गेट यूज करते हैं यहाँ पर, फील्ड नहीं यूज करते कभी, गेट से काम चलाते हैं। फिर देखते हैं इसका इम्पैक्ट, गेट एज ग्रेटर देन यूजर डॉट गेट एज, सो रिटर्न 1, पॉजिटिव, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, एल्स रिटर्न 0। ठीक है, तो हो गया लॉजिक। तो अब ये क्लास प्रॉपर काम करेगा। एंड इफ यू नोटिस, error is gone. Line 23 is not giving any error because now your user class is comparable. That's the Java rule. It says if you want to compare your object, make sure these objects are comparable. Let me show you one more thing here. As I said, so let's support that. So sorting, I use this thing, right? ArrayList integer, and I'm able to use sort method, reverse order. So if you notice here, integer class, see, extend some class and implements comparable, and it is giving the type class that this class is comparable. And this is not about integer, all wrapper classes in Java implements comparable. So if you pass any object inside a list of wrapper type, they are easy to compare each other. You can compare them easily. So let me show you some classes like string. If you say string class, there it is, comparable string. See, that's how we will learn all these stuffs, what this signature means. Let's see double class for double values. It is string double, oh, not double, this thing. Why is taking the okay, so double extend some number and implements comparable. So you can open any wrapper class, you will see that class is implementing comparable interface. That's why you can use these classes inside sort method, but it was not the case for user. User is a custom class and definitely it was not implementing comparable earlier. Now it's working. So next what I can do, let's run a for loop or a table, and see, again I don't need to cast it, everything is fine here. And let us print all stuffs user, and I guess toString is commented. Yep. So let's uncomment and let's what do you call that is already. So not this one, close. Okay, right click, don't need this one, run as application. So I have used uh, age base, so 5, 10, 20, 30, 40, working great. Yep. How do we reverse it? Right now it's 5 to 40. What about 40 to 5? Any idea or guess? Otherwise, any guess why? How to reverse the order? That's what customize means. You can do सर an anything about it. Yes. आई थिंक सर हम वहाँ पे रिटर्न में जो हम कर रहे थे वन, वहाँ हम्म पे ग्रेटर देन लेस देन लगा देंगे। बस लॉजिक चेंज कर दो, पूरा रिवर्स कर दो, यस। तो आपका आउटपुट भी रिवर्स हो जाएगा। दैट्स करेक्ट। जो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक है उसको रिवर्स कर दो। सो विल डू दैट इन अ मिनट। Okay, and this was the class. I missed
this is the output. So we can see it is easily sorting all that number by using that. I don't need to explain much, we already know this thing. Okay, and reversal is again quite straightforward, just change the conditions inside that compare to method. So if you reverse it, it will work fine. So going back to the code here, this is the logic which is doing sorter. So I'll just say negative goes here and 0 remains same. If both are equal, so return 0. Now what? Let's run this one more time. Right click, run as application, and it's reversed. It's 40, 30, 20, 10, 5. Simple enough. Just change the logic and you will get a reverse order collection. And now we have this whole what you call customize in our hand. As per a requirement, we can customize this process. It's not that mostly used in our code sorting sometimes because we have already some ready-made you can say classes. But since we are learning some basic stuff, that's why I've covered that. To reverse the sorting, just change the logic in compared to method. Okay, this is also done. Compare to, or you can say compare to is just belongs to comparable interface. Now, what about comparator? So that's one extra way, one more way to do this thing. The good thing about comparator is you don't have to change your logic inside your Pojo class, right? That saves us. But yeah, what you have to do, you have to create an extra class for that, right? It's not that ideal situation. Nobody like that, but yeah, it's possible. But you have to create an extra class for that. One extra class to get that sorting process. So let's create one class. Let's say employee. Okay, I'm going to do this quite fast because we already know the concept. So int, let's say id, and let's say string name. I always make fields private, generate data setters. Okay, and definitely I will go with constructor using fields and always have superclass constructor. Okay, so our class is ready. This time we are not going to change our Pojo class, and that's the ideal situation. Don't mess up with your Pojo class. Keep it as simple as possible. Don't write logic inside it. That's what Java says. If you want to write logic, create a separate class and do that there. But keep your Pojo classes as simple as you can do that. Okay, so it's here. Let's again try to do the sorting with this employee class. So sorting. Um, with sorting the state record right there. User sorting. Let me do one thing because here it's not explaining. We have used comparator with comparable sorting tester. Okay, let's copy this class and make it comparator. Comparator, and let's remove everything. Just for comparable. There it is. Okay, so we have a class employee. Idea is to create some objects of employee class and then pass them in a list. So let's quickly create object of employee. One equals new employee. I'll use this one. Let's keep name simple. 3782. Okay, we have
2, 3, 4, 5, and then let's get a list of employee type. It says employees equals new array list. Done. Time for creation. Employees dot add 1. Okay. Time for printing. This out. Let's print employee. Since we have a toString method, it should print all elements in the same way. So it's printing 1, 3, 7, 8, 2. Same sequence like we have given. Insertion order is maintained. Okay. Let's say after sorting by using comparator. Okay, so as we know, we have to create a separate class. So let's do this on ID. So like Pepin did, I'll do the same. I'll say ID, let's say employee ID comparator. Okay, done. Since it's a class, we need to override that interface method. So before starting that, let's read something about comparator. Comparator, there it is. So it says it's a functional interface. Let's leave that functional keyword. It will confuse you. Let's just say it's interface. Done. And what else? A comparison function which imposes a total ordering on some collection of objects. Okay, that's fine. Logic remains same for the comparator as well. If you want to achieve sorting, you have to use the same logic like we used here. Okay, but we don't have a specified object here. Let's see what it says. It's not that much. Okay, it contains multiple methods, but we have to talk about only comparator. Comparator is here. Sorry, compare method is here. So T1 and T2, type 1 and type 2. This is the method. So we don't have current object because we are totally creating a new object. So there you cannot use this keyword. It's a different class. So that different class will have its own this keyword. So this keyword won't work here. So we have two types, T1 and T2. Compare its arguments for order. Returns a negative integer 0 or positive integer as the first argument is less than. See, it's saying first argument is less than, equal to, greater than the second one. So I'm going to again pick this statement. Okay, now what we have to do? Let's see. Returns a negative integer as the first argument is less than the second argument. Okay, now I'll copy this line. Now it returns positive integer as the first argument is greater than, or 0. Returns um, 0 as the first argument equal to is equal to the second argument. Vipin, making sense? Any doubt or question? Manan, getting this? Yes, sir, no doubt. Okay, good. So same logic we are going to use in compare method. So let's quickly write implements keyword and write comparator this time. And again it will ask you type, that what type you're passing. Okay, let's say I don't know, or maybe I forgot, and override the method.
So it will give you objects. I mean, why it's giving object? I'm damn sure we are talking about employee class. Employee ID is here. So why I'm going for object one and object two? Again, I have to cast them. When I think you did that, you were casting it inside the method. Yeah. So better not to do this. Explicitly tell the compiler that see, I am going to compare employee class object. Once you give employee and you generate method from Eclipse, you will get these are names. Just change the name, reference E1 and E2 and done. Then we can have the same logic like we did earlier. So I'll save some time and replace some stuffs from there. So this time it's going to be E1. E1 dot, oh, it's actually not age, it's ID. Uh, it's going to be E2. Get ID, get ID. Oh, did I use if there? Oh, guys, you should have told me if else. आप लोग देखने देखे स्क्रीन को? नहीं सर, देखा था, पर मैंने सोचा कि इससे भी हो जाएगा तो। अरे नहीं, बोल दिया करो जो देखे। कई बार बोलने में और लिखने में कंफ्यूजन हो जाती है ना। मैं बोल रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। ठीक है, एल्सिफ रहेगा, एक बार में एक ही चलनी चाहिए। एल्सिफ ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा और ये 0 हो गया। ठीक है, डन। लॉजिक इज डन। नाउ गोइंग बैक टू टेस्टर। सो आफ्टर सॉर्टिंग अब कैसे काम करना है इसको? अगेन वी हैव टू कॉल दैट collections class, then sort. This time if you notice it has two methods, sort and sort, which takes two arguments. So I'll take which takes comparator as argument. First one we have already used. Second one takes list type and the comparator, this one. So my list name is or reference name is employees. Then which comparator I'm going to use? I'm going to use employee ID comparator. So new employee ID comparator and semicolon. Then let's call again. Okay, so let's run this code one more time to see the impact. And we're getting, oops, I forgot after changing that error. It's greater than, make it less than. Okay, because we have changed that configuration, we were testing it. So if it is greater than, so 1, less than, -1, and then 0. Okay, now I'll get it because I've copied from user and I was showing you the reverse order. That's why it happened. But now we have sorting on 1, 2, 3, 7, 8. So that's how you can create more classes as per requirement and implement the same logic for your sorting. Okay, this was about comparable and comparator, and definitely you guys, if you search on web the difference between these two, you'll get lots of answers. Let me just show you, but it's you who will read it and by heart it. Okay, if I open any image, so you will see we get some tables. Let's pick this one. So comparable interface is used to sort up with natural ordering. Comparator is used to attribute of different objects because we have got different class. Compare interface, compare uses this keyword, and here two different Java object class can be used. This is present in lang package. Okay, comparable belongs to lang package because all the wrapper classes inside lang. So comparable is inside lang, but comparator is present util package. Okay, let me do this, but yeah, remember this. This is important. Uh, okay, and let's complete our class as well. Okay, class goes here, then this class from util package, and finally the tester class.
everything in one image. Okay, so we have example for comparator by using id field. Likewise, you can go for name field, create a separate class, something like employee name comparator, and give the logic, and it will work. And this is the output before and after. Okay, so that's the end for comparable and comparator. Just write your own code, think about and do the logic and see if it matches with your imagination or not. Last thing I have mentioned yesterday, that can we use a class as a key in HashMap or tree map? So we can do that, but since you guys haven't done, so again it's going to be as a homework. And tomorrow we are going to start nested classes topic. Okay, so one thing from there, use custom class as a key in your tree map class. This is still your homework. We have done this sorting part, so that's the first homework. Second, um, check, or I'll say go through the nested classes concepts. ओके, सो थेरी है इनिशियली तो वो पढ़िएगा. मैं सारे टाइप्स नहीं कवर करूँगा. आई शो यू लाइक हाउ इट वर्क्स, एंड देन वीकेंड होगा और मंडे से हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आई वाज थिंकिंग अबाउट टू के स्टार्ट करें इसको जैसे सबलेट, देन आई रियलाइज कि एक टॉपिक मिस हो रहा है. ये हमें हेल्प करेगा जब हम एक काम करते हैं, क्योंकि अभी इवन अगर नेक्स्ट क्लास में आज पढ़ाऊंगा तो आप लोग भूल जाओगे इसको. इसको हम करेंगे विद जावा 8, दैट विल बेटर. सो लेट्स स्किप इट, इसको रन देते हैं. आप एक काम करिएगा, let's not do this now. We'll do this with Java 8 features. ठीक है, तो जब Java 8 के फीचर्स लाइक स्ट्रीम एपीआई एंड अदर स्टफ ट्राई करेंगे, फंक्शनल इंटरफेसेस, तब नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे. तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगा, फिर उसको रिफाइन करेंगे चीज़ों को कि Java 8 एक्चुअली, और यू कैन से स्ट्रीम एपीआई कैसे हेल्प कर रहा है इस केस में. ओके, पर स्टिल वन क्वेश्चन इज लेफ्ट कि कस्टम क्लास कैसे पास करनी है ट्री मैप में. अगेन साइट्स देखिए, ट्यूटोरियल पढ़िए. मनन कल सिस्टम शेयर करेंगे आप, ठीक है, एट एनी कॉस्ट. अब ऑप्शन नहीं आपके पास, तो ये पॉजिटिवली मुझे चाहिए. थियरी नहीं पढ़नी है, अब आपको एग्जांपल चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो करने के लिए कहा था वो मैं एग्जांपल के दिखा दिया. अब ये ट्राई करिएगा, सिस्टम में देखना है आपको एग्जांपल. एरर आता है कोई इशू नहीं, वो हम रिजॉल्व कर लेंगे, बट आई नीड दिस कोड इन सिस्टम, बोथ इन बोथ सिस्टम, नॉट जस्ट वन. तो एक ये टास्क आप करिएगा कलेक्शंस पे. प्लस अपने फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं. तो यहाँ पे हमने JDBC स्ट्रिंग स्पेसिफाई एक्सेप्ट आईओ थ्रेड्स, थ्रेड्स नहीं स्टार्ट किया हमने. और रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैम्डा. तो हम लैम्डा और नेस्टेड क्लासेस सबसे एंड में करेंगे, जब हम हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो उसके पैरेलली ये टॉपिक्स पिक कर लेंगे, कि कुछ तो पढ़ाना होगा उस टाइम. प्रोजेक्ट पे आप साइड बाई साइड काम करते रहिएगा, तब ये करेंगे. तो ये टॉपिक्स तब ज़्यादा बेटर रहेगा. तो मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर रहे हम लोग, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ये भी अगर रिक्वायरमेंट होगी जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तब इस टॉपिक को पिक कर लेंगे. तो 3 टॉपिक्स हम लिविंग फॉर नाउ,
क्योंकि ये टॉपिक्स वास्ट है और इनका अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। बट डेफिनेटली आई पुट अ नोट कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे क्या करा। सो फर्स्ट इज मल्टी थ्रेडिंग, नेस्टेड क्लास और जावा 8 फीचर्स। जावा 8 में बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए थे, तो हम पढ़ेंगे जो मोस्टली यूज्ड एंड आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में। सो ये 3 टॉपिक्स हैं जो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, अभी फिलहाल आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको प्रोजेक्ट में। तो ये हम करेंगे ड्यूरिंग योर इंटरव्यू प्रिपरेशन की। जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे, क्वेश्चंस की तैयारी करोगे, तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे उनको हैंडल करना है, तब वो सीख लेंगे हम लोग। सो आई कैन सी फ्रॉम दिस बॉक्स ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन एपीआई इज नॉट इम्पोर्टेंट, इवन इंटरव्यूज में कभी नहीं पूछा था, पर एक एम से टॉपिक है। लैम्डा क्लास, लैम्डा अब भूल गए लिखना वहाँ पे। अरे वो जावा 8 का पार्ट है भाई, वो लिखा ना 1.8। ओके। हाँ वो लैम्डा के पार्ट है। तो जावा 8 फीचर मतलब लैम्डास, फंक्शन इंटरफेसेस, स्ट्रीम एपीआई, जोड़ा टाइम एपीआई और फॉर ईच एनएस का एक और वर्जन है फॉर लूप, वो सब उसके अंदर ही है। तो हमने मोस्टली जो कोर जावा के कॉन्सेप्ट्स थे उनको चेक करा कैसे काम करते हैं। तो हम इनिशियली हमको ये नहीं पता था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, वहाँ से लेके हमने कलेक्शन तक के क्लास पिक करे। तो नाउ वी नो व्हाट इज क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे जावा सपोर्ट करता है बाय यूजिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। फिर हमने स्ट्रिंग क्लास देखा, उसकी डिटेल देखी, फिर स्ट्रिंग स्पेसिफायर देखे जो मॉडिफायर स्पेसिफायर सेम है जिसमें पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड था। देन वी सॉ एक्सेप्शन हैंडलिंग, देन वी सॉ इनपुट आउटपुट पैकेजेस, देन वी सॉ जेडीबीसी एपीआई एंड देन कलेक्शन एपीआई और कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो हमने जावा के वो टॉपिक्स पिक किए हैं जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो आप कभी देखोगे नहीं डे टू डे, मतलब एक दिन नहीं तो दूसरे दिन आप पक्का इन टॉपिक्स को टच करोगे। तो वो हमने सारे पिक कर लिए। कल हम स्टार्ट करेंगे इक्लिप्स का एक और वर्जन, ऑलरेडी हमारे पास है ऑलरेडी। तो हम यूज़ करेंगे इसका वेब वर्जन जो कि इस बॉक्स में टॉपिक्स में जेएसपी सर्वलेट्स। तो उसके लिए आप लोग क्या करिएगा, ऑलरेडी आई बिलीव कि आपके सबके पास होगा। सो हेल्प में जाकर ये कंफर्म कर लेना कि यहाँ पे जावा डबल ई इंटरप्राइज लिखा रहा होगा जो इसका वर्जन है। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये रहा इक्लिप्स। अभी कंफर्म कर लो, इक्लिप्स जावा डबल ई आई डी ई फॉर वेब डेवलपर्स। इक्लिप्स आपको ये कहना चाहिए कि ये जो वर्जन है वो वेब डेवलपर्स के लिए है, चाहे कोई भी पुराना वर्जन हो नया वर्जन हो। यहाँ पे डबल ई आई डी लिखा होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंफर्म कर लीजिए, है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर डाउनलोड करना पड़ेगा आपको दूसरा इक्लिप्स। वैसे मैंने फर्स्ट प्लेस ये कहा था कि आप लोग इसी वर्जन को डाउनलोड करिएगा, डबल ई जे टू डब्ल्यू वर्जन होता है इक्लिप्स का। तो कल हम फिर इसमें जेएसपी सर्वर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा वेब पेज होगा। उसी वेब पेज पे आइडिया क्या रहेगा कि हम पहले बेसिक्स सीखेंगे कि वेब पेज कैसे काम करते हैं, कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। सो फॉर टुमारो, फॉर क्लास, पहला नॉट टुमारो, सर्वलेट जेएसपी टास्क फॉर अपकमिंग क्लासेस। मैं ऑलरेडी क्लियर करके चल रहा हूँ कि क्या क्या हमारा अप्रोच रहेगा ताकि आप लोग तैयार रहो। करो तो अच्छी बात है, अदरवाइज चीज़ें मिस हो जाएंगी आप लोग के लिए। बिल्कुल तो तैयार रहेंगे सर। पहले से पढ़ के आइए, इसलिए पहले पढ़ के आओगे ना, यस मेरा सर। टाइम बचेगा, आप लोगों का टाइम बचेगा, समझने में यस सर आसानी तब। होगी, है ना। तो ठीक है, गुड। सो बेसिक्स ऑफ सर्वलेट्स देखेंगे, क्या होते हैं वो, व्हाट इज सर्वलेट, व्हाट क्वेश्चन, एंड व्हेन टू यूज एंड व्हाई टू यूज। राइट, ये 3 क्वेश्चन हमेशा होंगे कि क्या है, कब यूज करना है और क्यों यूज करना है। ठीक है, देन आफ्टर इसमें हम पेज रीडायरेक्शन सीखेंगे। दैट्स क्वाइट इजी, काफ़ी सिंपल, एक तो मेथड यूज़ करना है और आपका पेज आराम से रीडायरेक्ट हो जाएगा। डेटा ट्रांसफ़र सीखेंगे, ठीक है, कि एक पेज से दूसरे पेज को डेटा ट्रांसफ़र कैसे करना है, ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ठीक है, देन ये सारा काम यूआई पे करेंगे। ठीक है, पेजेस बनाएंगे बहुत सिंपल सिंपल, अल्ट्रा सिंपल पेजेस। उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको एच टी एम एल सी एस बहुत सुंदर सा दिखाना है, इस पर नहीं करने वाले हम लोग, बैक एंड के टास्क करने वाले। वी आर लर्निंग राइट नाउ बैक एंड टेक्नोलॉजी।
तो जितना टास्क करेंगे वो एक बैकएंड डेवलपर के पर्सपेक्टिव से करने वाले हैं। उसके बाद जब ये इतना हमें आ जाएगा कि बेसिक्स क्या है और ये सब, तब हम JDBC API करेंगे विथ सर्वलेट, राइट। तो हम दो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक वेब पेज बनाओगे, लेट्स सपोज लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज, अपडेट पेज, डिलीट, कुछ भी, और वो आपके एक्चुअल डेटाबेस कनेक्ट होगा। यहाँ लॉगिन किया तो डेटाबेस में चेक होगा कि ये यूज़र है कि नहीं, और तब आपके पास लॉगिन पेज या एडमिन पेज या होम पेज, जो जिसको भी जो भी कह लो, वो ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे वो ये इंटरेस्टिंग होगा, इसमें मजा आएगा काम करने में अगर टाइम दोगे तो, अदरवाइज बहुत बोरिंग लगेगा क्लास। तो आई बिलीव कि अगर वेब वेब टेक्नोलॉजी करने वाले तो मज़ा आना चाहिए, अगर सीरियसली आप क्लास में हो तो। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे JSP इंट्रो। ठीक है, JSP जावा सर्वलेट का एक्सटेंशन है, एडवांस वर्जन है, और मोस्टली यूज्ड फॉर UI पर्पस। ठीक है, UI मतलब यूजर इंटरफेस। जो वेब पेजेस होते हैं मोस्टली हम JSP पेज वही यूज़ करते हैं, और सर्वलेट मोस्टली बैकएंड टास्क के लिए, जो बैकएंड मतलब डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, या फिर जिसमें लॉजिक लिखेंगे आप लोग, वो सारे काम सर्वलेट करेगा। तो वो हम समझ लेंगे, डोंट वरी अगर समझ नहीं आया तो। JSP कंट्रोल हो गया, फिर इसमें भी सेम वही करेंगे, पेज रिडायरेक्शन इन JSP पेजेस में कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, और उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, इसके पूरा माइंड से, ऑब्जेक्ट, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ये काफ़ी क्रूशियल है इसमें, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स ऑफ JSP। ये तो ये 7 टॉपिक्स हैं जो हम लोग अपकमिंग क्लासेस में कवर करने वाले हैं, 5 डेज, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कल थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूंगा कि प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करना है, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है इक्लिप्स में वेब पेज का, और बेसिक्स डिस्कशन करेंगे, और थोड़ा सा सर्वलेट के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी टफ है गाइस, क्योंकि दिस टेक्नोलॉजी इज़ क्वाइट ओल्ड। ओल्ड मीन्स काफ़ी पुरानी है, 27-28 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो उस टाइम इतना नहीं था कि आपने एक वेब पे गए, एक URL पे क्लिक किया, अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करे या फिर कुछ डिटेल दिया और आपका प्रोजेक्ट बना के दे दिया, जैसे स्प्रिंग बूट में होता है। ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसमें एक दिन लग जाएगा आराम से समझाने में। फर्स्ट डे के बाद फिर थोड़ा सा स्पेस पकड़ेंगे, और ये जो 30, 31 और ये जो महीना होगा, ये वाला वीक होगा, इसके एंड तक हम ये पूरा सर्वर JSP खत्म कर लेंगे। सो टिल 3 नवंबर हमारा ये JSP सर्वर खत्म हो जाएगा। और फिर उसके नेक्स्ट वीक मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया, 3rd तक हमारा JSP सर्वर खत्म, 6 to 10 हमारा हाइबरनेट खत्म। ठीक है, 13 से लेके 24 तक हम लोग स्प्रिंग स्टार्ट कर देंगे, स्प्रिंग का कोर जितना एसेंशियल होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे भूल जाओगे, उतना पढ़ो जितना काम आ सके, क्योंकि हमें एक्चुअली स्टार्ट करना है स्प्रिंग बूट। तो इस 13 से लेके 24 तक हम स्प्रिंग के कोर फीचर्स और कुछ एडवांस फीचर्स पिक करेंगे इस वीक में। और 27 तक अगर सबको सही रहा तो 27 से लेके इस वीक तक हम स्प्रिंग बोर्ड के फीचर्स कवर कर लेंगे। तो ये जो 13 से लेके 1 का वीक है, हो सकता है कि इसी इन तीनों वीक में हम लोग कोर, जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कोर है वो, प्लस स्प्रिंग बोर्ड का कोर, वो सीख लेंगे। और अगर इतना हमने, ये जो वीक बहुत क्रुशियल होगा, तो इसमें छुट्टी मत लीजिएगा, स्किप मत करिएगा, और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा। तो जो ये नेक्स्ट वीक आएगा 4 से लेके 15 तक दिसंबर का, यहाँ पे सिर्फ आपका प्रोजेक्ट का काम चल रहा होगा। तो प्रोजेक्ट और पैरेलली कोड जावा की जो कॉन्सेप्ट मैंने स्किप किए वो चलेंगे। तो मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया कि 4 से लेके जितना भी आपके पास बाकी के दिन रहेंगे, उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, जितना इमेजिनेशन कर सकते हो करो, और उसको इम्प्लीमेंट करो अपने प्रोजेक्ट में। लास्ट वीक मैं ऑफ रहूँगा, छुट्टी लेकर रखूँगा, तो मैं यहाँ इस वीक नहीं हूँ मैं, वाइस 25। तो मैं कोशिश करूँगा कि 4 से 22 तक आपका जितना टास्क है सब खत्म हो जाए मेरे एंड से। तो आपकी क्लासेस मैंने जैसे कि का एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि 22 तक, आपके 22 दिसंबर तक आपके सारे जितने टास्क जो मेरे एंड से हैं वो खत्म हो चुके होंगे। तो नवंबर दिसंबर काफ़ी क्रूशियल रहेगा, आई नो। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, छुट्टी भी मिलने वाली है दिवाली की, 1-2 दिन आप लोग हो सकता है घर जाओ, तो वो मेंटेन करिएगा। पर ये जो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया रिकॉर्डिंग में रहेगा, तो वापस जाके सुन लीजिएगा कि क्या प्लानिंग है। सो 22 दिसंबर तक मैं प्लान कर रहा हूँ कि खत्म हो जाए, क्योंकि मैं लास्ट वीक इस साल का जो है दिसंबर का वो छुट्टी पर रहूँगा मैं ऑफिशियली। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, कहीं रहूँगा जहाँ भी। तो मेरा आइडिया है कि जब तक मैं वापस आऊँ आप लोगों का सेटअप हो सके सब कुछ, फिर आप लोग बस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो और फटाफट 2-4 इंटरव्यू क्लियर करके सेटल हो जाओ। ठीक और है भाई सर विपिन? बाकी सब्जेक्ट के जो पार्ट बताए थे आप, मतलब AWT साइड,
AWT कैसे, मतलब AWT क्यों यूज़ यूनिट, करनी है? नहीं यूनिट टेस्ट और वो वगैरह प्रोजेक्ट जो में कवर हो जाएंगे ना, वो प्रोजेक्ट में आएगा सारा वो। यूनिट टेस्ट और डिप्लॉयमेंट वगैरह। हाँ वो सब प्रोजेक्ट में आएगा, उसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे। इसी में की बात कर रहे हो तो इसमें देखो क्या कर रखा है मैंने, जेएसपी सर्वलेट हो गया एक वीक का, इसमें हाइबरनेट एक वीक का, स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग बूट। एमवीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग एमवीसी करेंगे तो उसमें फिर अलग से एक वेब पेज बनाना पड़ेगा, अलग चीज़ चलेंगे, तो एमवीसी आपको अलग ले जाएगा स्प्रिंग बूट से। सो बोथ आर डिफरेंट, एमवीसी एंड बूट इज डिफरेंट। तो मैं सोच स्प्रिंग एमवीसी स्किप करते हैं यहाँ से, और स्प्रिंग कोर पढ़ते हैं और फिर स्प्रिंग बूट। क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी भी प्रोजेक्ट में चल जाओ, 99.9% आपको स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट मिलने वाला है, स्प्रिंग एमवीसी नहीं मिलने वाली। तो 0.1% चांस है कि आप स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट पे काम करो। तो उसके बाद इसी स्प्रिंग बूट में हम लोग जे यूनिट इंप्लीमेंट करेंगे, टेस्ट केसेस लिखेंगे, जो भी आप कोड लिखोगे उसके टेस्ट केसेस उसी प्रोजेक्ट में लिखेंगे। ठीक है फिर। यस सर, और उसके बाद ये फ्रंट एंड वाला पार्ट जो आपने हाँ एंगुलर या रिएक्ट। राइट। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो जो ये बेसिक्स हैं इसके वो देख लेंगे एंगुलर के।